Hello children, I am Poonam Bagga welcoming you in your maths class. We are studying chapter 11 mensuration from class 8th maths. In our previous video, we learnt a few formulae related to the areas of some quadrilaterals. We learnt that the area of a trapezium is given by half into sum of parallel sides into the distance between them. This distance between the parallel sides of a trapezium is also referred to as the height of the trapezium. So, in some questions, whenever we will be given the height of trapezium, it means the distance between the parallel sides of the trapezium. So, we can use either this term height or we can use this expression distance between the parallel sides. Both will be correct. Next, we learnt the area of a general quadrilateral. It is given by half into the length of its diagonal into sum of the perpendiculars drawn from the remaining two vertices on the diagonal. Next, we learnt the area of a rhombus is given by half into product of its diagonals. I hope you have learnt these formulae very well after understanding how we arrived at these formulae. Now today we will be doing the first 6 questions from exercise 11.2 based on these formulae. Before we start, I suggest you to do these questions once on your own and then you can always verify your answers from here. So we begin with the first question from exercise 11.2. The shape of the top surface of a table is a trapezium. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meters. So, you can see in the figure, this is the top surface of a table and it is trapezium in shape and we have to find its area. So, it's simple, we will be using the formula to find the area of a trapezium. We have been given the lengths of the parallel sides. This is 1 meter. एंड दिस इज़ 1.2 मीटर. ये पैरेलल साइड्स की लेंथ हमें दी गई है और इन साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल साइड्स, इट इज़ गिवन एज 0.8 meters. So easily we can find this area by using the formula. We write the solution. We write here area of the top surface of table which is trapezium shaped. This area will be given by half into sum of parallel sides into the distance between them. That's very easy. Write the formula and put in the values. You will get the answer. Now this will be equal to half into sum of parallel sides. You can see this is 1 meter here plus 1.2 meters here. So 1.2 into the distance between these two sides. It is given 0.8 meters. So multiply by 0.8. Now this will be equal to half into 1 plus 1.2. You can see easily this will be 2.2 and if you have any confusion, just think over, we add these numbers when we place the decimal below the decimal. अब इस नंबर में तो डेसिमल है लेकिन फर्स्ट नंबर में डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा है. इसका मतलब हमें नंबर जो है उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है और फिर उसके बाद आप 0 लिख सकते हैं. सो दिस विल बी रिटन एज 1.0, दिस नंबर 1 एंड 1.2. इजीली यू कैन ऐड 2.2. तो अगर आप डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हैं तो इस तरह से रफ में आप ऐड कर लीजिए. यू विल गेट द आंसर एंड सून यू विल गेट परफेक्ट. दिस विल बी नाउ 0.8. हियर वी कैन easily cancel 2.2 by 2. This will go 2 1s are 2 and this will go 1.1 times. So 1.1 into 0.8. Now how to multiply? Think that there is no decimal. सोचिए कि डेसिमल है ही नहीं तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 into 8 and it is 88. और अब हम डेसिमल लगाएंगे. आप देखेंगे डेसिमल के बाद एक डिजिट है इस नंबर में और एक डिजिट है इस नंबर में, तो टोटल 2 digits are there after the decimal. So in the answer we will mark the decimal after counting 2 digits from the back, 1 and 2. तो 2 digits काउंट कर लिए और अब हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे और यहाँ कोई नंबर नहीं है तो हम लगा सकते हैं 0. सो इट विल बी 0.88 एंड नाउ व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस एरिया? येस, इट विल बी मीटर स्क्वायर. ये मीटर स्क्वायर हमें कहाँ से मिलता है? आप देखिए यहाँ पर ये सम आपका आएगा मीटर्स में क्योंकि दोनों लेंथ्स मीटर में है.
और फिर ये हाइट भी आपकी है मीटर में, सो मीटर इंटू मीटर इट इज़ इक्वल टू मीटर स्क्वायर, और यहीं से हमें एरिया की यूनिट मिलती है मीटर स्क्वायर. सो इन दिस वे आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. वी हैव फाउंड the area of the top surface of the table. We write in words also. Hence, the area of the top surface of the table is 0.88 meter square. I hope it's clear. Next we take question 2. The area of a trapezium is 34 centimeter square and the length of one of the parallel sides is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel side. Let us first draw one trapezium. Let this be the trapezium. Now we have been given the area of this trapezium. This is 34 centimeter square. जो ये अंदर का रीजन है ये है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. फिर हमें दिया है लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर. यू कैन सी दिस एंड दिस साइड, दीज टू साइड्स आर पैरेलल और इनमें से एक पैरेलल साइड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर. सो लेट अस टेक दिस वन एज 10 सेंटीमीटर. देन वी हैव बीन गिवन इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर. हाइट का मतलब हुआ इन्हीं पैरेलल साइड्स के बीच में जो ये डिस्टेंस है ये आपका दिया गया है 4 सेंटीमीटर. And then we have to find the length of the other parallel side. जो ये next या कह लीजिए दूसरी parallel side है इसकी length हमें find out करनी है. Getting it? Simple है. पहले हम यहाँ पर formula लिखेंगे area of trapezium का, उसमें ये सारी values जो दी गई हैं वो रखेंगे और जो unknown value है वो find out करेंगे. This is the way. आप पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया गया है. We write the solution. We have been given area of trapezium. ये दिया गया है और इससे रिलेटेड हमें फॉर्मूला भी पता है तो उससे हम स्टार्ट करेंगे. दिस इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. फर्स्ट वी आर राइटिंग वट एवर हैज़ बीन गिवन. देन लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स वी राइट हियर लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड. लेट अस डिनोट इट बाय स्मॉल a. दिस इज इक्वल टू 10 centimeters. Okay, then we have been given the height of trapezium. Let us denote it by small h. It is given as 4 centimeter. और अब हमसे जो लेंथ पूछी गई है दूसरी पैरेलल साइड की लेंथ पूछी है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं. We write here let the length of the other parallel side, जिसको हम डिनोट कर लेते हैं स्मॉल b से. दिस बी x सेंटीमीटर्स, क्योंकि अदर मेजरमेंट सेंटीमीटर में है तो ये भी हम सेंटीमीटर में लेंगे. अब यहाँ हमने साइड्स के लिए जो पैरेलल साइड्स हैं a और b डिनोट कर दिया है और हाइट के लिए h. तो अब हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो इन्हीं नोटेशन फॉर्म में लिख सकते हैं विदाउट एक्चुअली यूजिंग द वर्ड्स. वी कैन नाउ फाइंड द एरिया. क्योंकि यहाँ पर एरिया की बात हो रही है तो अब हमें उसी का फॉर्मूला यूज़ करते हुए स्टार्ट करना होगा सॉल्यूशन. वी नो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. दिस इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. अब वो हमने a और b से डिनोट कर दिया है इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम और द हाइट वी हैव डिनोटेड इट बाय h. तो अब यहाँ पर वर्ड्स यूज़ करके नहीं बल्कि हम यहाँ वेरिएबल्स यूज़ करके इस फॉर्मूले को एक्सप्रेस कर रहे हैं. गेटिंग इट क्लियर? तो आप चाहें तो इस तरह से वेरिएबल्स यूज़ करते हुए भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं या फिर आप वर्ड्स में लिखिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम और हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू द हाइट. सो एनीवेज यू कैन राइट द फॉर्मूला. हम ये फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया गया है. बस अब ये सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूला में हम पुट इन करते हैं और अननोन वैल्यू जो हमने x मान ली है वो हमें मिल जाएगी. वी राइट हियर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इट इज़ गिवन एज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो वी राइट 34 इन प्लेस ऑफ इट. इक्वल टू की जगह इक्वल टू, 1/2 की जगह 1/2, फिर इनटू a. a इज़ द
length of the first parallel side, it is 10 centimeters. So we write here 10 plus this second parallel side, we have taken it as x centimeters. So we write here x into h is the height, which we have taken as 4 centimeters. So into 4. Okay. Now this will be 34 equal to, you can now cancel this 4 by 2. क्या हम इस 10 को भी 2 से कैंसिल कर सकते हैं या नहीं, ये सोचिए आप. तो आप देखेंगे ये 10 जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं है, इट इज़ बीइंग एडेड टू x. ये जो 10 है ये x के साथ एडअप हो रहा है, तो अभी ये इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं है, इसलिए 10 को हम 2 से कैंसिल नहीं कर सकते. अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई स्टेप आ रहा है तो अपने कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए. यहाँ पर 10 को तो हम 2 से कैंसिल नहीं कर सकते, बट येस यू कैन सी 4 इज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 को हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं. सो दिस विल बी 2 1 2, 2 2 4. वी आर लेफ्ट अप विद 10 प्लस एक्स इंटू 2. गेटिंग इट. अब हमें ये 2 यहाँ से रिमूव करना है. जो भी अननोन वैल्यू है यहाँ पर x वेरिएबल, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसे हमें एक एक करके सभी इसके साथ जो नंबर्स हैं उनको ट्रांसपोज करना होगा और इसे बिल्कुल अकेला करना होगा, तभी इसकी वैल्यू मिलेगी. सो नाउ वी विल बी सेंडिंग दिस 2 टू द LHS. ये मल्टीप्लाई में है, LHS में ट्रांसपोज होके ये डिवीजन में आ जाएगा. सो दिस विल बी 34 अपॉन 2 इक्वल टू 10 प्लस एक्स. दिस विल बी 17. 34 by 2 is 17 equal to 10 plus x, or this will be 17 minus 10 equal to x. This implies x is equal to 7 centimeters. And so this is the length of the other parallel side. Hence, the length of the other parallel side is 7 centimeters. यूनिट ज़रूर लिखिएगा. एंड विद दिस वी हैव डन दिस सॉल्यूशन. एक बार फिर से देखते हैं. इस क्वेश्चन में हमें ट्रेपेजियम का एरिया दिया गया था और फिर दोनों पैरेलल साइड्स में से एक साइड की लेंथ दी गई थी और हाइट दी गई थी, या कह लीजिए दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस दिया गया था. और हमें अब यहाँ पर जो सेकेंड पैरेलल साइड है इसकी लेंथ पूछी गई थी कि ये कितनी लंबी है. अब यहाँ पर क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया गया है और कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं उसी से रिलेटेड, तो हम पहले सभी इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं और फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिखना है हमें. और इसमें जो जो वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में दी गई हैं वो सब यहाँ पर पुट इन करनी है. अपने आप आपको दिख जाएगा जो अननोन वैल्यू है वो x की टर्म्स में, और सिंपल इक्वेशन आएगी जिसे सॉल्व करना है, उससे वेरिएबल x की वैल्यू मिल जाएगी और अननोन क्वांटिटी की लेंथ हमें पता चल जाएगी. गेटिंग इट. नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 3. Length of the fence of a trapezium shaped field ABCD is 120 meters. You can see this is a trapezium shaped field ABCD और यहाँ पर length of fence दी गई है. What do you mean by the length of the fence? अगर इस field पर आप किनारे पर बाउंड्री पर फेंस लगाएंगे तो इसका मतलब एक्चुअली हमें ये जो लेंथ ऑफ फेंस दी गई है ये और कुछ नहीं बल्कि पेरीमीटर दिया गया है. पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD. और पेरीमीटर का मतलब जो इसकी साइड्स हैं उन सभी की लेंथ्स का सम हमें दिया गया है. दिस मीन्स दैट द सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स इट इज इक्वल टू 120 meters. ये दिया गया है. नेक्स्ट, if BC is 48 meters, you can see BC it is 48 meters. Then CD is 17 meters. This one CD 17 meters it is given. And then AD is 40 meters. AD ये 40 meters दिया गया है. Find the area of this field. तो क्योंकि अब ये ट्रेपेजियम शेप्ड है तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला. एंड देन वी हैव बीन गिवन साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC. ये जो पैरेलल साइड्स हैं AD और BC इनके ये परपेंडिकुलर है. इसका मतलब इन दोनों साइड्स के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और कह लीजिए कि ये इस ट्रेपेजियम की हाइट है. तो ईजिली अब अगर हमें ये AB की वैल्यू मिल जाए, लेंथ मिल जाए, तो हमें यहाँ पर पैरेलल साइड्स की लेंथ पता है, ये AB मिल जाएगा, तो इजीली हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो
तो बस पहला काम है कि ए बी फाइंड आउट करना है और दूसरा काम है एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब ए बी हमें कहाँ से मिलेगा? देखिए, सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स इट इज़ 120। जो पेरीमीटर है वो है इन चारों साइड्स का सम, और चारों में से 3 साइड्स तो हमें पता है, इनका सम भी पता है। ईजिली हम ये 4th साइड पता कर सकेंगे। वी राइट द सॉल्यूशन हियर ऑन नेक्स्ट पेज। Perimeter of the field, this will be given by AB plus BC plus CD plus DA, and this is equal to 120 meters. Just recall, this is 48 meters, this is 17 meters, this is 40 meters. Now AB we have to find, this will be AB. BC it is 48, so 48 plus CD it is 17 plus DA it is 40. This is equal to 120. AB plus here add these numbers, 8 and 7 15, 1 carried, 4 5 6 and 4 10, 105 equal to 120. This will give you AB equal to 120 minus 105. This will be AB equal to 15 meters. With this we get the length AB. And what is AB? AB is the perpendicular distance between these parallel sides. Now we see, now in trapezium ABCD, AD it is parallel to BC, it's given, and AB is the perpendicular distance between AD and BC. This we can see from the figure. What we can see? That AD is parallel to BC, AD is parallel to BC. This is also given in the question, and AB is the perpendicular distance between AD and BC. इन दोनों sides के बीच में ये perpendicular distance है. Now we can easily find this area, area of trapezium ABCD. We take the next page. Area of trapezium ABCD. This will now be equal to half into sum of parallel sides into the distance between them. This now will be equal to half into sum of parallel sides. This will be AD plus BC. These are the parallel sides. You can see, into the distance between them. It is AB. This we have found to be 15 meters. This is 40 meters and this is 48 meters. Easily now place in these values. Half into, this is 40 plus 48 into, we have 15. This will now be equal to half into, now just think about it, can we cancel this 40 by 2? क्या हम इस 40 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर 40 अभी अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है. इट इज़ बीइंग एडेड टू 48. तो पहले हम ऐड कर लेते हैं. वी विल गेट इट एज 8 and 8 88 into 15. Now we can cancel this 88 by 2, क्योंकि अब 88 अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाई हो रही है. So now we can cancel this by 2. We will get it 44 into 15. Now 15 fours are it's 60, 6 carried, 15 fours are 60 plus 6, it will be 66. So 660, and now what will be the unit? It will be meter square. Remember, the unit of area is meter square as the lengths are given in meters. With this we get the area of this trapezium shaped field. We write the answer here in words. Hence the area of trapezium shaped field is 660 meter square. Okay, with this we move to our next question. Question 4. The diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meters and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meters and 13 meters. Find the area of the field. What we see here, this is a quadrilateral and it is a field, quadrilateral shaped field, and we have been given
द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगनल्स, दो डायगनल्स होते हैं, इनमें से एक डायगनल की लेंथ दी गई है जो है 24 मीटर्स, यू कैन सी इन दिस फिगर। और अब इसी डायगनल पर रिमेनिंग टू वर्टिसेस से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए जा रहे हैं। दिस वन इज 13 मीटर्स लॉन्ग एंड दिस वन इज 8 मीटर्स लॉन्ग। वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया। तो अब आप रिकॉल कीजिए, यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना होगा, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इट इज इक्वल टू हाफ into the length of the diagonal or simply the diagonal into the sum of the perpendiculars drawn from the remaining two vertices on this diagonal। तो हमें यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए और इसका एरिया फिर बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर पाएंगे। वी टेक हियर area of quadrilateral is equal to half into diagonal into sum of perpendiculars drawn from the remaining two vertices. This will now be equal to half into the length of the diagonal is 24 meters. So 24 into sum of the perpendiculars. This is 13 meters, this is 8 meters. So 13 plus 8. This will be now half into 24 into 8 and 3. It's 11, 21. We can easily cancel this 24 by 2. It will go 12 times. 12 into 21. Multiply these two numbers. 12 ones are 12, 1 carried, 12 twos are 24 and 1 25. So it will be 252. You can erase this rough work and we get the answer. What will be the unit? It will be meter square. With this we get the area of the field. Hence the area of quadrilateral shaped field is 252 meter square. Okay, it was an easy one. Next we take question 5. The diagonals of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Find its area. ये तो बहुत easy है. Rhombus के diagonals दिए गए हैं और area find out करना है. Simple. We have to use the formula to find the area of a rhombus and it is half into product of diagonals. Simple है. Let us start the solution here. Area of rhombus. It is given by half into product of diagonals. We know the lengths of diagonals. This will now be equal to half into, this is 7.5 into 12. 7.5 into this 12 can be cancelled by 2, 6 times. So 7.5 into 6, 6 5s are 30, 3 carried, 42 and 3, 45 and 45.0 and the unit will be centimeter into centimeter. So centimeter square. This is the area of rhombus and this is your answer. Very simple, very easy. And what do you mean by 45.0? It's actually 45 itself, 45 centimeter square. So you can write the answer here in place of writing it here. Getting it? It was an easy one. Next we have question 6. Find the area of a rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. Now we have not been given the lengths of the diagonals. We have to find the area of a rhombus whose side is given and altitude is given. What do you mean by altitude? We mean the height of the rhombus. This is said to be altitude. These two quantities we have been given. Then next, if one of its diagonals is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. अब diagonals में से एक ही diagonal की length दी गई है और दूसरे diagonal की length तो हमें find out करनी है. तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ही question में दो parts हैं और figure तो same है rhombus. First we draw one rhombus and then we will talk about it. Yes, let me make some space. This one. Let this be the rhombus. Now we have been given its side is 5 centimeter. तो ये जो side है 5 centimeter दी गई है. All the four sides will be 5 centimeter long क्योंकि rhombus में सभी sides equal length की होती हैं. But here we will be focusing on this one length 5 centimeter.
then its altitude is 4.8 centimeter. Altitude means this height, this is 4.8 सेंटीमीटर. तो अब आप देखेंगे रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम ही तो है, पैरेललोग्राम का ही तो टाइप है रोम्बस, जहाँ पर चारों साइड्स इक्वल होती हैं लेंथ में. तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला एंड इट इज़ बेस इनटू हाइट. ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करेंगे. बेस आपका हो गया 5 और हाइट हो गई आपकी 4.8. यू कैन मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस रोम्बस. बात समझ में आई? हाउ टू फाइंड दिस एरिया. नाउ वंस वी नो दिस एरिया वी कैन ऑल्सो इक्वेट इट टू द फॉर्मूला हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, हाफ d1 इंटू d2. अगर हम डायगनल्स को d1 d2 से डिनोट करें तो अब यही एरिया इक्वल होगा हाफ इंटू d1 इंटू d2. हमें यहाँ पर d1 या कह लीजिए फर्स्ट डायगनल की लेंथ तो पता है, it's 8 and then we take it as d2. If we take it as d2 then this will be the area of this same rhombus. और क्योंकि रोम्बस तो एक ही शेप है, यहाँ पर एक ही रोम्बस है, तो दोनों वेज से जो एरिया मिलेगा हमें वो दोनों एक्चुअली आपस में इक्वल होंगे. तो पहले हम यहाँ पर एरिया की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. इट विल बी 5 8 40, 4 कैरेड इट विल बी 24.0 और वी से 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ से हमें एरिया मिल जाएगा रोम्बस का. एंड नाउ दिस एरिया विल बी इक्वल टू दिस एरिया बिकॉज द फिगर इज एक्चुअली द सेम. हम किसी भी तरह से एरिया फाइंड आउट करें, एरिया तो सेम मिलेगा. हम एक ही शेप का एरिया 2 या 3 तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास इस तरह से ऑप्शंस अवेलेबल हों. तो यहाँ पर क्योंकि हमें बेस भी पता है, हाइट भी पता है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हमने ये एरिया फाइंड आउट कर लिया. और अब ये एरिया यूज़ करते हुए ये जो वैल्यू हमें मिली है हम इसको इक्वेट करेंगे सेकेंड फॉर्मूला के, विच इज़ हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स. यहाँ पर हमें एक डायगनल की लेंथ पता है और दूसरे डायगनल की लेंथ हम अब इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. d2 विल बी इक्वल टू 24/4 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. और इस तरह से हमने अदर डायगनल की लेंथ भी पता कर ली है. अंडरस्टूड? द बेस लाइन इज क्लियर. नाउ वी विल बी प्रेजेंटिंग द आंसर वेरी फेयरली. वी टेक द नेक्स्ट पेज to show the answer neatly. We take here solution. Length of the side of rhombus, let us consider it as base. This is 5 centimeter. Then length of its altitude, or we also call it as height, this is given as 4.8 centimeter. Now area of rhombus, it is given by base into height. So we write here this will be equal to, base is 5 centimeter, so 5 centimeter into height it is 4.8 centimeter. So multiply these two numbers, you will get it as 24.0 and centimeter into centimeter it will be centimeter square. So this is equal to 24 centimeter square. In this way we have found the area of rhombus which was asked in the question. Now we have to find the length of the other diagonal when we have been given the length of one of the diagonals. एक diagonal की length दी गई है 8 centimeter you can see, and we have to find the length of the other diagonal. For this we will again be using the formula to find the area of a rhombus and it is equal to half into product of diagonals. और क्योंकि हमें यहाँ पर area of rhombus मिल गया है, we can easily equate the area to this number 24 centimeter square and then we will be able to find the length of the other diagonal. We write here length of one diagonal, it is given as 8 centimeter. Let the length of the other diagonal be x centimeter. Now area of rhombus, it is given by half into product of diagonals. We have found the area, this is coming 24 centimeter square and this will be equal to half into product of diagonals. One is 8 and the other one is x. So this much centimeter square, this is the area. Now we can easily write here 24 equal to half into 8 into x. Cancel this 8 by 2, you will get it 24 equal to 4x. From here we can write 24 upon 4 equal to x, or we get x equal to 6 centimeter, and hence the length of the other diagonal, it is 6 centimeter.
hence the length of the other diagonal of rhombus is 6 सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए हमारे पास फिगर वही था रोम्बस, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर बेस और हाइट दी गई थी तो पहले हमने यहाँ एरिया फाइंड आउट किया यूजिंग द फॉर्मूला बेस इनटू हाइट, जिससे हमें एरिया मिल गया। फिर हमारे पास डायगनल्स को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन है और पूछा भी है एक डायगनल की लेंथ, तो यहाँ हमें वो फॉर्मूला भी यूज़ करना होगा, एरिया ऑफ रोम्बस इज़ गिवन बाय हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई उससे हमने एक फॉर्मूला सिलेक्ट किया बेस इंटू हाइट, जो इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी गई है उससे दूसरा फॉर्मूला सिलेक्ट किया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, इसमें वैल्यूज पुट इन करी और अननोन वैल्यू हमें इजीली मिल गई। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। Now in this video we end, and I hope you will be practicing these questions once again and try to make such questions more of your own. Next we will soon meet again. Bye for now.